Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Now I'm here for you to bring a new topic, new chapter. Class BCOM1, that's and we are studying our English textbook, English for undergraduate. You must have this book and you have already studied some chapters. Now we are going to do the next one, London Road. First of all, I will tell you the questions and some words when I read the chapters for you, my dear students, so that you can understand them well. The question number is that, what was the part of the writer's life that he closed forever? Actually, this chapter is about a young person who is leaving his home for wandering about the world. He wanted to have some knowledge about the world. He wanted to enjoy the world. Let's see what happened in the end. Question number 2, how did writer's mother feel about his leaving home? When the writer was leaving the home, so his mother was feeling so sad, but she did not show actually. So this question is about that. Question number 3, do you think the writer's home life was a happy one? When you read the chapter, you would come to know, my dear student, that writer's life was happy or not. So you'll have to give the answer of this question. Did the writer enjoy feeling that he was now free? So somewhat when he reached his destination, whatever it was, the seaside or the beach or whatever, so he felt free himself, free for all, from all the things, from all the boundaries, right? From parents' restrictions and from the, siblings, naughty tricks, different other things. So this question is about that thing. Quote the words that tell us that the writer had an optimistic nature. You will have to find those words in the chapters that showed that writer has a positive nature, right? Optimistic means positive, right? Question number 6, why did the writer spend months wandering about the hills before he left the home? When he left the home, actually the main event of the chapter is that he left the home. When he left the home, before leaving home, he had been wandering about the hills, about the locality, about the area. So what was the reason? You'll have to tell after studying the chapter. Now let's do some difficult words so that you can understand the chapter well. Inevitable, unavoidable, right? जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सके, जरूरी, ठीक है, important. Taunted, hurt. Taunted means तंस किया भी होता है और hurt माना जब बंदा तंस करता है तो hurt ही होता है, तकलीफ होती है. Echoes, repeated sounds. Echoes, you must know well that बार बार जो आवाज़ें पलट कर आती हैं, like that. Reluctance, unwillingness. Reluctance somewhat feel hesitation, right? That means unwillingness. करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, like that. Gnarled. My dear student, spelling is that G-N-A-R-L. ED is a past tense. So, but G is not sound here. We will have to pronounce it gnarled. And if it is passed from gnarled, right? That means rough. That word is about writer's mother's hand. Actually, she was presenting him a breakfast when he was leaving the home. So, her, in the chapter, the writer's mother's hand was a description. There was a description about her hand. So, that word is used over here. Propelled, persuaded to leave. छोड़ने के लिए मजबूर करना, propelled means. So, dear students, let's do. Let me read some of the paragraphs of the chapter for you. Inshallah, you will enjoy this chapter a lot because this is a chapter for youngsters. And when they feel about their family, their parents, like that. Let me open the book first. And the writer is wondering about the locality, about the other cities. 126.
London Road. Okay, dear students. Now, let me read first paragraph over here so that I can make you understand. The stooping figure of my mother, raised deep in the grass and cut there like a piece of sheep's wool, was the last I saw of my country home as I left it to discover the world. Main reason has come out that he wanted to discover the world. तो वो कहता है आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो मेरी माँ थी, और वो उदास माँ और उसके वो सूखे खुश्क हाथ, उसके वो छुरियों वाले खुश्क हाथ. She stood old and bent at the top of the bank, silently watching me go. One gnarled red hand raised in farewell and blessing, not questioning why I went. वो वहाँ खामोशी से खड़ी हुई थी और मुझे जाते हुए देख रही थी, और उसके सुर्ख हाथ मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए उठे. फेयरवेल मीन्स लाइक गुड बाय. ठीक है, खुदा हाफिज कहने के लिए उठे. राइट, कोई सवाल नहीं किया उसने. मतलब शी वॉज शोइंग दैट शी वॉज कॉन्सेंट with my feelings or my decision, but she was sad, I know. तो वो कहता आखिरी चीज़ मुझे ये याद थी जब मैं गया. At the bend of the road I looked back again and saw the gold light die behind her. और रोड के किनारे पे जाके मैंने दोबारा पीछे देखा तो मेरी माँ के पीछे गोल्डन लाइट जो जल रही थी वो उसके घर की लाइट होगी. Then I turned the corner, और उसके बाद मैंने जो मोड़ था वो मैंने मोड़ ले लिया. इसका मतलब है कि वो लास्ट सीन था जो मैंने देखा अपने घर का और अपनी माँ का. Pass the village school and close the part of life of my life forever. जो हमारे गांव का स्कूल था उसको भी छोड़ के मैं आगे निकल गया, और जो मेरी ज़िंदगी थी उससे मैं बहुत आगे निकल गया. अब वो सब मैंने पीछे छोड़ दिया. थोड़ा सा और वो कुछ संडे के बारे में बताता है. इट वॉज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग इन अर्ली जून, द राइट टाइम टू बी लीविंग होम. एक चमकदार संडे, इतवार की सुबह. चमकदार इसलिए कि ज़्यादातर ड्रिजलिंग रहती है. दैट स्टोरी इज़ अबाउट फॉरेन कंट्रीज़. तो जून का शुरू का मंथ था, ठीक है, और वो उसके फैसले के हिसाब से, उसके डिसीजन के हिसाब से ये बिल्कुल सही टाइम था घर छोड़ के जाने का, जो उसका डिसीजन था. माई 3 sisters एंड अ ब्रदर हैड ऑलरेडी गॉन बिफोर मी. मेरी 3 बहनें और एक भाई मुझसे पहले ही जा चुके थे. 2 other brothers had yet to make up their minds. दो मेरे और भाई थे, वो अभी अपना जहन बना रहे थे. They were still sleeping that morning. वो अभी तक सो रहे थे इस सुबह. But my mother had got up early and cooked me a heavy breakfast. लेकिन मेरी माँ सुबह बहुत जल्दी उठ गई और मेरे लिए एक भारी सा, एक अच्छा सा, बेहतरीन सा नाश्ता तैयार किया. But my breakfast had stood wordlessly while I ate it. और जब मैंने उसे खाया तो वो मेरे साथ बिल्कुल खामोश, बग़ैर किसी लफ्ज़ों के, बग़ैर किसी बात किए वो मेरे साथ खड़ी रही. Her hand on my chair and had then helped me pack up my few belongings. और उसने, जब मैं नाश्ता कर रहा था, उसने अपने हाथ मेरी चेयर पे रखे हुए थे, मेरे साथ खड़ी रही, और फिर उसके बाद उसने मेरी जो चीज़ें थी उनको पैक करने में मेरी मदद की. There had been no fuss, no appeals, no attempts at advice or persuasion. और उसने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरे बच्चे मत जाओ, ऐसा नहीं करो, लाइक दैट. और ना ही कोई उसने कोशिश की, और ना ही कोई उसने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, ना ही कोई ऐसा मशवरा दिया कि जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, वॉट एवर, लाइक दैट. ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट शी वॉज. ओनली अ लॉन्ग एंड सर्चिंग लुक. हाँ, लेकिन बहुत गहराई से वो मुझे देखती रही, मुझे घूरती रही. Then with my bags on my back, I'd gone out into the early sunshine and climbed through the long wet grass to the road. और उसके बाद मैंने अपने पीठ पर अपना बैग लटकाया और चमकदार सूरज की रोशनी में, यानी कि धूप में, मैं बाहर निकल आया और लंबे रोड पर मैंने चलना शुरू कर दिया. It was 1934. दैट द सेकेंड पैराग्राफ. ये 1934 की बात है. इट वॉज 19 years, आई वॉज 19 years old, और उस वक्त मैं 19 साल का था. स्टिल सॉफ्ट एट द एजेस, और अभी तक मेरी ये टेंडर एज थी, मैं सॉफ्ट एज में था. बट विद अ कॉन्फिडेंट बिलीफ इन गुड फॉर्च्यून. लेकिन मुझे मुकम्मल एतमाद था अपनी बेहतरीन,
अपनी अच्छी किस्मत का जो मैं आजमाने निकला था. I carried a small rolled up tent, a violin in a blanket, a change of clothes, a tin of treacle biscuits and some cheese. अच्छा, जो अपने साथ सामान लेके गए थे वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपने साथ एक टेंट लिया, उसको रोल किया, और एक वायलिन उन्होंने ब्लैंकेट में लपेट के उसको रखा, ड्रेस रखे कुछ, और कुछ बिस्किट्स रखे. ठीक है. आई वॉज एक्साइटेड व्हेन ग्लोरियस नोइंग आई हैड फार टू गो. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ख्र हो रहा था अपने इस तरह के फ़ैसले में. बट नॉट एज येट. हाउ फार. एज आई लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लीपिंग विलेज. और जैसे ही मैंने घर से निकल गया और उस सोते हुए गांव को छोड़ दिया. दैट वाज वेरी क्वाइट टाइम. बिल्कुल खामोशी, सुनसान, ऐसे जैसे कि सब सो ही रहे हों, कुछ नहीं भी सो रहे होंगे, लेकिन दैट वाज क्वाइट टाइम. इट नेवर अकर्ड टू मी दैट अदर्स हैड डन दिस बिफोर मी. और ये मुझे नहीं पता कि ये मुझसे पहले भी ये कोई कर चुका है. ठीक है डियर स्टूडेंट. नाल का मतलब मैंने आपको रफ बताया. वैन ग्लोरियस रह गया था. वैन ग्लोरियस का मतलब है वेरी प्राउड, राइट, एंड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दोज पैराग्राफ्स माय डियर स्टूडेंट्स. So we'll be completing the chapter in my next lecture. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.